Today's our topic is resource allocation graph. This is one of the important topic. Okay, एग्जाम में ये पूछा जाता है for 7 or 8 marks. Okay, so अगर आप तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and let's start for the today's topic. Okay, resource allocation graph is used to represent and analyze the resource allocation and potential deadlocks. Okay, एग्जाम में एलिमेंट्स इसके जो 4 एलिमेंट्स है वो पूछे जाते हैं. सो लेट्स सी सर्कल प्रोसेस. ओके, दिस स्क्वायर विथ 4 स्मॉल स्क्वायर इज resource type with 4 इंस्टेंस. ओके, नाउ ये प्रोसेस है और इंस्टेंस है. ये एरो जब इधर जा रहा होगा तो अब हम क्या कहेंगे कि P1 रिक्वेस्ट इंस्टेंस ऑफ R1, और जब एरो इधर आ रहा है सो हम कहेंगे कि P1 इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ R1. ये इसके एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है. ओके, नाउ 4 रिसोर्सेस है और 3 प्रोसेसेस है. दिस इज द सिंपल. इफ वी ड्रॉ दिस लाइन, ओके, first remove this line. Okay, now we draw this line, then it will become a graph with a deadlock. In exam you have to draw 2 diagrams. Okay, one without this line and one with this line. Okay, and mention below the graph with deadlock. यहाँ पर हो गए 4 points हमारे. Now a graph with cycle but no deadlock. Okay, here are two processes and 2 resources and 4 processes. Okay, now conditions देखते हैं कि कब cycle deadlock होगा और नहीं होगा. If a graph contains no cycle means no deadlock. cycle क्या होता है देखो, P1 रिसोर्स में गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अब यहाँ पर ये पूरा हो रहा है मीन्स ये साइकिल है. ना इसको छोड़कर देखो, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर, इसमें कहाँ पर साइकिल नहीं प्रेजेंट है मीन्स वो डेडलॉक नहीं होगा. ओके, इफ़ अ साइकिल प्रेजेंट, ओके, इसमें भी 2 कंडीशंस हैं. इफ़ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक. ओके, if one instance होता है, instance is this. Okay, and per resource type. Okay, ये resource है और ये इसमें के instance. Okay, then deadlock. And server means multiple instance per resource type, then possibility, because if multiple instances are present we are handling the deadlock, we solve the problem of deadlock. Okay, this is all about methods for our deadlock handling. If you want it you can read it, or if you want a screenshot then write it. This is not asking in exams, that's why I'm not teaching you this. So thanks for watching and please subscribe my channel. Bye.